Hello everyone, welcome to Network Technologies. Now, in network technology, I already explained introduction to OSI model. Now, in detailing of OSI model, in last video, I explained you physical layer and responsibility of physical layer. Now, in today's video, I am going to teach you second layer of OSI model, that is Datalink layer. Now, as we all know that physical layer is responsible for transmitted beat को ट्रांसमिट करता है फिजिकल लेयर, बट उसके अपर लेयर की बात करें, हम डेटा लिंक लेयर की बात करें, सो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग frame from one node to the next node. It means it represent frame. The data link layer transform the physical layer to a reliable link. It means it transfer a message with no error, and it make the physical layer appear error free to the upper layer, that is network layer. Now the data link layer has two sub layer. First one is LLC, that is logical link control sub layer, and second one is MAC, that is media access control sub layer. Now the role of the LLC sub layer is to establish and maintain link between communicating devices, and it also control data flow among various applications and services, as well as it provide acknowledgement and error notification mechanism. So LLC sub layer is responsible for data flow, right, error free message transmission. It is also responsible for acknowledgement and error notification, etc. Now what is the work of media access control sub layer? Now second layer, media access control sub layer, control the multiple devices for sharing and control access to the physical media for transport. Now it is also responsible for physical addressing of the frame. Now here we all know that there are two type of address in network, in computer, right? First one is physical and second one is logical. Logical address means IP एड्रेस, ठीक है, और फिजिकल एड्रेस मीन्स मैक एड्रेस, राइट. तो यहाँ पे जो मैक सब लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल एड्रेसिंग करने के लिए फ्रेम की, ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम हियर? लाइक वी कैन से दैट अ packet means packets are divided into small part, and that small part is called as frame, and frame is divided into bits, right? Now here one diagram is there that shows the relationship of data link layer to the network layer and physical layer, right? Now let us discuss other responsibility of data link layer, right? First one is framing. As I said, it represent frame. So the data link layer divide the stream of bit received from network layer into manageable data unit, that is called as फ्रेम, राइट. नेटवर्क लेयर से जो पैकेट हमें मिलता है उसको फ्रेम में डिवाइड करता है, और रिसीवर साइड क्या होगा? ये जो मैंने प्रोसेस बोली वो सेंडिंग साइड होगी कि नेटवर्क लेयर से उसने पैकेट लिया और फ्रेम में डिवाइड कर दिया डेटा लिंक लेयर ने, लेकिन रिसीवर साइड वो बीट गैदर करेगा फिजिकल लेयर से और बीट को गैदर करके फ्रेम बनाएगा, ठीक है, और फ्रेम भेजेगा नेटवर्क लेयर को, राइट. Now second one is physical addressing. If frame are to be distributed to different system on the network, then the data link layer add a header to the frame to define the sender or receiver of the frame, right? Physical addressing मतलब यहाँ पे MAC address जो है, that is MAC address मतलब physical address जो है वो frame में ऐड करेगा sender और receiver दोनों का. And if the frame is intended for a system outside the sender's network, then receiver address is the address of the device that connect the network to the next node. Now यहाँ पे physical addressing और logical addressing में difference क्या है? Physical addressing जो है वो permanent होता है, MAC address. Like when we manufacture NIC, तब
तभी वो डिवाइस पे इनबिल्ट होता है, राइट, दैट इज़ फिजिकल एड्रेस। वाइल लॉजिकल एड्रेस इज़ टेम्पररी, वो चेंज हो सकता है, हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा लाइक 168.1.1.1, राइट, तो उसको हम आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस कहते हैं ना। फिजिकल एड्रेस कब यूज होता है और लॉजिकल एड्रेस कब यूज होता है। लाइक हम लोकल नेटवर्क की बात करें, हम एक ही नेटवर्क में मैसेज सेंड करना चाहते हैं इन अ सिंगल नेटवर्क, देन द कंप्यूटर यूज मैक एड्रेस, इट मीन्स इट यूज फिजिकल एड्रेस। बट आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज आउट ऑफ माई नेटवर्क, राइट, आउट ऑफ माई नेटवर्क, देन अगर दूसरे कोई नेटवर्क में मुझे मैसेज सेंड करना है, देन दैट पीसी इज यूज्ड लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस कब सेंड होगा, जब हमें सेम नेटवर्क में मैसेज सेंड करना है, राइट। नाउ third one is flow control. Now if the rate at which the data are absorbed by the receiver is less than the rate at which data are produced in the sender, then the data link layer apply a flow control mechanism to avoid overwhelming the receiver. Like in last video I have already discussed transmission rate, right. It means at a particular rate a sender can send a bit and at same rate a receiver can receive that bit, right. But अगर मैंने फ्रेम पैकेट मतलब बीट जो सेंड कर रही हूँ पर सेकंड, लाइक मैं 100 KB सेंड कर रही हूँ बट 100 KB रिसीवर साइड रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल, पैकेट और बीट्स का फ्लो कंट्रोल करने का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का, राइट, दैट इज फ्लो कंट्रोल। नाउ next one is error control. The data link layer add reliability to the physical layer by adding mechanism to detect and retransmit damage or lost frame. And it also use mechanism to recognize duplicate frame. Now यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, पर्टिकुलर फ्रेम जो बीच में छूट गई है या सेंड नहीं हुई है उसको तो रिकॉग्नाइज करता ही है, मतलब एरर तो रिकॉग्नाइज करता ही है। बट अगर कोई फ्रेम 2 बार सेंड हो गई है, इट मीन्स वो डुप्लीकेट फ्रेम को भी डिटेक्ट करता है। सो हियर एरर कंट्रोल इज नॉर्मली अचीव थ्रू अ ट्रेलर एडेड टू द एंड ऑफ द फ्रेम, राइट। हमने देखा था डायग्राम में डेटा लिंक लेयर में हेडर प्लस ट्रेलर भी ऐड होता है, तो वो एरर कंट्रोल करने का वर्क किसका है, ट्रेलर का है। नाउ यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 200 पेजेस की बुक है, तो उसमें से मैंने पहले 100 पेज भेज दिए हैं। नाउ 101 to 110 पेज मिसिंग है और 111 से फिर से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो मिसिंग पेज को फाइंड करने का काम डेटा लिंक लेयर का है, ठीक है। सो वो मिसिंग फ्रेम को भी डिटेक्ट करती है और आपको मैसेज देती है कि इतने पेज मिसिंग है, राइट। नाउ next and last one is access control. When 2 or more devices are connected to the same link, then data link layer protocol are necessary to determine which device has control over the link at any given time. It means if 2 devices are connected with a single link, then यहाँ पे कौन पहले लिंक पे मैसेज सेंड करेगा और वो लिंक पे किसका कंट्रोल है वो डिसाइड करने का काम भी डेटा लिंक लेयर का है, राइट। सो हियर आई कंप्लीट द फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर. Now let us discuss protocols of data link layer. There are three protocols of data link layer, that is PPP, point to point, 802.1, 802.2, and devices at data link layers are, first one is bridge, then switch, and then NIC. Now NIC is also device of physical layer, and here data link layer, right? So here I complete the data link layer. Detailing of devices and protocols will be described in unit number 3, right? In data link layer, if you have any query regarding my explanation or any functional, right, then you can message me. Thank you.